Banjar Valley is famous for its tree houses, and that's why we have booked this beautiful tree house for 2 nights. So let me give you the insight tour. So first thing first, you cannot take your shoes inside because of guys इतना snow है. अपनी इतनी सुंदर चीजें को जगह को गंदा नहीं करना है. So come on in. So we got the really amazing bedding over here, and lighting I would say is perfect. Thankfully we have full size mirror also. So the dressing table के साथ साथ आपके पास cupboard की option भी है, which is nice that you have a area to add your stuff and all. And इसके नीचे भी है जहाँ पे मैंने अपनी shoes डाल दिए. Oh, nice! I'll put mine as well. And here you have like a tea and coffee corner, table chair. हमने अभी यहाँ पे अपनी कॉफी एंजॉय करी यार. गाइस लुक एट दिस. मतलब बड़ी बड़ी विंडोज का जो यहाँ पे बेनिफिट है ना, ब्यूटीफुल. कहीं भी देखो इट्स ऑल नजारा, कहीं भी. इवन आप देखोगे बेड के पीछे भी आपको एक विंडो मिली है जहाँ पे मुझे बिल्कुल बर्फ दिखाई दे रही है यार. सो नाइस. नाउ द बेस्ट पार्ट, बालकनी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेस्ट पार्ट. Oh my god! ये झूला तो ठीक है, but यार, look at the view. Dan. And look at me. Let's look at you. Wow. Yes. Show them what can I see in front of me, okay? Wow. Like I'll be sitting here for a that time. I don't want to go anywhere. So yeah, with this, you have view here. You have view here also. Oh my god. Just come. And now sunshine. Snow and sunshine. Oh my god, beautiful yaar. I'm so much happy with this tree house. So much. अभी भी fun part बचा है. So keep going. So we have something upstairs also. Let's go. It's a little bit tricky climbing these stairs. Yeah. Enzo नहीं चढ़ सकता without our help. Guys, don't mind the jerky video, but I am definitely going to be sleeping here. Let me just check out the bedding, okay? And become a kitty. Oh wow! Holy moly! I'm just loving it. Superb. so Enzo is like he wants to come up, but oh my god, he's almost there. No, he's gonna fall and badam. पूरा ट्री हाउस हिल गया इसके गिरने से. एंजो स्टे. पूरा ट्री हाउस हिला दिया तूने गिरने से. Let me show you the bathroom क्योंकि ये भी बहुत सुंदर है. With the bathtub, guys. Yeah, a tree house with a bathtub. Voila. You have a geyser, shower, Everything. Sink. It is quite amazing. If you are coming to Banjar Valley, I would highly, Jibhi मतलब अगर आप Jibhi आ रहे हो, tandi आ रहे हो, so I would highly recommend book a tree house and spend a night or so. You would love it. So Nitish, how do you like the tree house? I like it a lot. So thank you so much, Sona, for gifting me this tree house on the birthday. In the sense that we are staying here. What is wrong, Badu? No, Enzo, बाहर इधर जाओ. उधर नहीं जाना. Enzo just wanna go out and just wanna play in snow. If you have any questions about tree houses in GB or cottages in GB, mud houses in GB, so please do write them down in the comments, and we'll try to answer as much as possible. So with this, we'll end this room tour and see you in the next one. Okay, so we are having our lunch. So हम खा रहे हैं पनीर की सब्जी और चपाती. With this view, guys. Ta-da! So guys, हम अपने गिरे बिना हम अपने ट्री हाउस से थोड़ा सा नीचे आए, जस्ट वॉक करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए और वॉक करने के लिए विद आर डियर एंजल. सो बहुत बर्फ़ है और अब क्योंकि थोड़ी सी पिघल भी रही है तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हुई पड़ी है. कभी किधर को गिर रहे हैं, कभी कुधर को गिर रहे हैं. बट ट्रस्ट मी, वी आर जस्ट इन दी fields only. We are not going anywhere, but still we are loving our time right now. And do you wanna check out these both guys staring at me at the same time? Wait a second. Look at them. And look what they are facing. Back also you can see there's one more tree house. It looks really nice as well. And हमारा वाला थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है. So this area is all about tree houses and all.
So we are just exploring and enjoying our evening like so. पहाड़ों में ये तो फायदा है, उठो चलो कहीं को भी एंड बस enjoy करो यार, और क्या कर सकते हो आप, इससे अच्छा और क्या होगा, राइट। सो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं वापस अपने ट्री हाउस पे एंड we'll be enjoying our evening, chilling out, and then we gonna watch some movie and yeah, enjoys again, busy with his digging. हाँ, नेटफ्लिक्स देखने वाले हैं। कल बड़ा मज़ा आया, मतलब एक तो जगह का थोड़ा सा माहौल होता है जगह ने थोड़ा माहौल क्रिएट किया होता है, और देन आपकी पसंद की कोई चीज़ देखने को मिल जाए, सो दैट्स लाइक विन विन। ये देखो ज़रा नीचे वैली का व्यू भी है। मैंने वैसे दूसरे तरीके से वीडियो बनाई है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। एंड पता नहीं क्या होता है यार, सर्दी में आते ही मेरा मुंह इतना सूज जाता है, इतना मोटा अंडे जैसा हो जाता है। आई डोंट नो वाई। आई थिंक अब हम लोग जा रहे हैं वापस एंड मिलते हैं आपसे, बाय बाय। So guys, this is how it looks at night time. पूरी awesome सी lights के साथ and some fairy touch as well, fairy lights touch as well. एंजो भाई साहब चप्पल लगे हुए हैं चबाने। Yeah. Do you want to come up and see how it looks? या शट डाउन द लाइट। ऊपर वाली एम्बियंस बड़ी अच्छी सेट करते हैं। हाँ ना? Yeah. पता नहीं ये वाली लाइट कहाँ से लगेगा। Oh. So if you turn off all the lights, तो फेरी लाइट्स बड़ा ही अच्छा ये एक फील दे रही है इस पेड़ की। Yeah, and the main part is upstairs. So we've created an ambience for you guys. I can jump aside to other people's house as well. I can do that. Hope you guys like this vlog. अगर आपको ये vlog पसंद आया हो तो guys प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट भी करना कि आपको क्या इस चीज़ में, इस व्लॉग में अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी कमेंट करना, बिकॉज हम लोग आपकी सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और ये आप हमारे नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे हमने नेक्स्ट व्लॉग में क्या मस्ती करी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ, बी हैप्पी, बाय।